Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. Okay. So we are live with our Punjab exam series, Polity. So आज की ਜਿਹੜੀ क्लास है, पहला ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ क्लासेस ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, we were talking about the science part. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ पॉलिटी ਦੇ ਬਾਰੇ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ पॉलिटी ਦੀ क्लास होगी, good afternoon निवेदिता, it will be based on both easy as well as moderate level questions. Okay, so moderate and easy level ਤੇ based ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ क्लास ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ if your concepts are clear ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ, you will be able to solve that question. Okay, is that fine? So ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So batch has been started 23 ਮਈ ਨੂੰ बैच स्टार्ट हो चुका है. PSSSB एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर 107 वैकेंसियां. ग्राम सेवक 792 वैकेंसियां. So you can directly go to www.launchpadeducation.in. उत्थे जाके you will get a course over there and you apply that code LP Abhinav and get a straight away discount. Okay. So right now discount will be 30%. 30% discount if you apply code LP Abhinav. ठीक है जी. And if you opt for one core batch, Punjab core batch, what you will get a key to the entire batches. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਬੈਚਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਓਗੇ. ਓਕੇ ਜੀ. ਸੋ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੋਡ LP Abhinav. ਓਕੇ. एंड IES PCS ਦੇ ਬੈਚਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ assured in. ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ assured in. ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਰ ਦੀ. ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ, ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਨੋਇੰਗ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ. ਕਿਹਦੇ ਚ assured ਹੈ ਜੀ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪਲੂਰਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? हाँ जी guys, what is the right answer? What is the right answer? हाँ जी guys, no one understand this. मैं दस रहा. ਜਿਹੜੀ stability है of government, okay, it is actually assured in presidential form of government. Okay, so ਜਿਹੜਾ presidential form of government ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ stability of the government can be assured. parliamentary form of government ਦੇ ਵਿੱਚ stability ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ government ਹੈ, that means ਜਿਹੜੀ executive ਹੈ, it is part of the legislature. So executive is actually responsible to legislature, hence stability cannot be ensured. So stability of government is assured in presidential form of government. Whereas जब ਅਸੀਂ presidential form of government ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ executive ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ legislature ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, hence ਇਹ ਇਹਨੂੰ answerable ਨਹੀਂ ਹੈ and hence stability is assured. Okay जी, is that clear? Good. Parliamentary form of government is also known as, very easy question, parliamentary government form of government is also known as responsive government, responsible government, federal government या फिर presidential government. ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ correct answer ਹੈ ਜੀ? What is the correct answer? Parliamentary form of government is also known as responsive government, responsible government, federal government and presidential government. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ parliamentary government ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ executive ਹੁੰਦਾ ਹੈ, it is responsible to legislature. Okay, so hence right answer is responsible government. ਜਿਹੜੀ parliamentary form of government ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? It's a responsible government. Who among the following are not appointed by the President of India? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਜੱਜਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਜੱਜਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ?
इन्हां चों किस नूं जिहड़ा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट नहीं करता है? व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ जी, सो गुरप्रीत इज सेइंग सी वाइस प्रेजिडेंट, दैट्स राइट, क्योंकि जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट है वो इलैक्ट होके आंदा है, इलैक्ट होके आंदा है इन अ मैनर which is prescribed in the constitution of India. ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ electoral college ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So question can be the difference between the electoral college of the president as well as vice president. Okay जी, how are legislative excesses of parliament and assemblies checked? Legislative excesses ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? देखो पार्लियामेंट बनाई गई है, पार्लियामेंट का काम की ਹੁੰਦਾ है लॉ मेकिंग करना, पार्लियामेंट का काम की ਹੁੰਦਾ है लेजिस्लेट करना। So how are legislative excesses of parliament and assemblies checked? So legislative excesses of the parliament and assemblies are checked through judicial review, judicial review. So जब parliament ਉਹ law making करना शुरू कर दिंदी है, ਜਿਹੜੀ law making constitution ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ parliament ਐਦਾਂ ਦੇ laws ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਆਇਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ 3 ਵਿੰਗਸ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ। दैट्स हाउ इट गोज। I hope it is fine to you, सारी चीज़ें क्लियर ने, वेरी गुड। चलते हैं अगे। ओके, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? मैं तुहानू अगे भी समझाया सी जब जुडिशियल रिव्यू का असीं जिक्र कीता सी कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज एक्चुअली द पावर ऑफ द जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द जुडिशरी। किस तरीके की पावर है? टू कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेट, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेट पावर की दी है, इट इज पावर ऑफ जुडिशरी। जैसे जुडिशरी की गल करते हैं, इंक्लूडिंग बोथ हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। सो जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेट, कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगे रख के ओदी वैलिडेशन चेक करनी किदी, बोथ legislations as well as executive decision of both state legislature as well as union legislature, parliamentary legislations. Okay, so judicial review is the power of judiciary. Judiciary includes High Court and Supreme Court to constitutionally validate what? Legislative enactments as well as executive decision of both state legislature as well as union. Okay, as well as parliament. Is that fine? I hope it is clear. No money can be introduced in the Lok Sabha without the prior approval of. No money, कोई भी money bill can be introduced, कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता लोक सभा दे विच विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। केड़ा राइट आंसर है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? हाँ जी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो साक्षी सिंह प्रेसिडेंट। ओके फाइन, फिर थोड़ी गल मान लेने हैं ते प्रेसिडेंट ते टिक कर दिन्ने। एनी हाउ नेक्स्ट, राज्यसभा एंजॉयज मोर पावर देन द लोक सभा इन द केस ऑफ। सो जी राज्यसभा, देखो दो हाउसेज हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेशन, राज्यसभा एंड लोक सभा, दोनों को अपनी अपनी रिस्पैक्टिव पावर है। किसी टाइम के उत्ते लोक सभा को ज्यादा पावर्स होणगियां, किसी टाइम के उत्ते राज्यसभा को ज्यादा पावर्स होणगियां। हुण इत्थे किसी टाइम के उत्ते की होगा, राज्यसभा प्लस लोक सभा दे विच की होगा, इक्वालिटी होगी, दे विल बी इक्वल। ओके, तो क्वेश्चन की है राज्यसभा एंजॉयज मोर पावर देन द लोक सभा इन केस ऑफ व्हाट बिल्स? मनी बिल्स, नॉन मनी बिल्स, सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, या फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी गाइस, व्हाट इज राइट? व्हाट इज द राइट आंसर? Sakshi is saying setting up of all India services, more powers. Okay, when it comes to amendment of the constitution, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ? when it comes to amendment of the constitution, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂਜੀ guys, quickly, fast, बोलते नहीं यार। So easy, Rajya Sabha enjoys more power than the Lok Sabha in case of setting up of all India services. Okay,
and when we talk about amendments to the constitution, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ enjoys equal power, as in ਜੇ constitutional amendment bill है, it has to be passed separately by both houses. ਜੇ दोनों हाउस नहीं separately pass करते, then bill would lapse, it will not get passed. No joint sitting. Very good. Who is competent to dissolve the Rajya Sabha? Rajya Sabha ਨੂੰ dissolve ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ competent ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ. Who is competent to dissolve Rajya Sabha? Chairman, President, joint session, none of these. Jaldi, very fast. You cannot take much time on these questions. Who is competent? Who is competent to dissolve the Rajya Sabha? The chairman, the Rajya Sabha, the president, the joint session of parliament, या फिर none of these? हाँ जी guys. Good. Right answer is none of these. क्यों? Why? क्योंकि जेडी राज्य सभा है, क्योंकि जेडी राज्य सभा है, it is a permanent house. Rajya Sabha, since is a permanent house, therefore it cannot be dissolved. Next, Indian Parliament includes. जेडी Indian Parliament है, it includes. So Indian Parliament है कि वैसे it's a law making body. Law making body. Parliament is a law making body. Parliament ਦੇ ਵਿੱਚ ministers ਦਾ ਬਹਿਣਾ means executive is part of the legislature. Okay, that's how it goes. So ਜਿਹੜੀ Indian Parliament है, it includes President, Lok Sabha as well as Rajya Sabha. Good, very good. D. Very nice, impressive. The presidential government operates on the principle of. The presidential government, it operates on the principle of division of power between center and states, centralization of powers, balance of powers, separation of powers. So the presidential government operates on the principle of division of powers between center and the state, centralization of power, balance of power, separation of power. हाँ जी, what is the right answer? So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ already explain कर चुका हूँ presidential form of government. जब ਅਸੀਂ presidential form of government ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ both ਜਿਹੜੇ executive as well as legislature, they work independently. Executive is not part of the legislature, is not responsible to legislature. Okay, whereas in the parliamentary form of government, executive is part of the legislature. That's how it goes. Okay, so presidential government operates on the principle of separation of powers. Separation of powers. Separation of power, not centralization of power, guys. Not B nahi hai the right answer. It is separation of power. Presidential form of government operates on the principle of separation of power. मैं तो कोर्स भी थोड़ी चीज समझाई सी की. Okay? समझ आ गया? जेड़े जाने B कह रहे हो उन्हें समझ आ गया इसका जवाब कि नहीं आया? The members of estimates committee are elected from Lok Sabha only, elected from Rajya Sabha only, elected from both Lok Sabha and Rajya Sabha, nominated by Speaker of the Lok Sabha. Members of the estimates committee. So parliamentary committees are there, some are ad hoc committees, some aren't ad hoc. So some are financial committees. Financial committees ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ public accounts committee, estimates committee and committees on public undertaking. Okay, so financial committee, parliamentary committees ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚ financial committee ਹੈ. Financial committees ਦੇ ਵਿੱਚ we have public accounts committee, we have estimates committee, public accounts, estimates committee on public undertaking. Okay, so members of the estimates committee are elected from Lok Sabha only या Rajya Sabha only या both Lok Sabha या nominated by the speaker. Right answer is A, elected from Lok Sabha only. Is that fine? ठीक है जी, इत्थे तक clear है ਤੁਹਾਨੂੰ? This was an important question. एक important question थी. All right.
From which fund can the unanticipated expenditure be met without the prior approval of the parliament? इन्हां चो केड़ा ऐसा फंड है जिहदे चो unanticipated expenditure किया जा सकता है without the prior approval of the parliament? Is it consolidated fund? Is it contingency fund? Is it vote on account या फिर treasury चो? So Kiranjeet is saying D, Sakshi is saying A. Sakshi saying contingency. Okay, that's right. Right answer is contingency fund of India. So एक होता है consolidated fund of India. Consolidated fund of India वो fund होता है no money to be withdrawn from the consolidated fund of India except without the permission of the parliament. That means जे पार्लियामेंट की परमिशन है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਜੀ is that fine? So contingency fund of India, vote on account from the treasury, consolidated fund of India. Contingency fund of India is the right answer. So the council of ministers is collectively responsible to, very easy question, Lok Sabha, repeat nahi karange. If the prime minister of India submits his resignation, this is important. If the prime minister of India submits his resignation to the president, it will mean the resignation of Kidi? Prime Minister only, Prime Minister and the cabinet ministers, entire council of ministers, Prime Minister, cabinet minister and the speaker. If the Prime Minister of India submits his resignation to the president, it will mean the resignation of Prime Minister only, Prime Minister and cabinet minister, entire council of ministers, Prime Minister, cabinet minister and the speaker. Keda ji correct answer? Very good. Entire council of minister. क्यों? क्योंकि there is a principle of sim and sync together. ਜਿਹੜਾ sim and sync together है, यही एक important aspect है किदा parliamentary form of government ਦਾ. So we are following parliamentary form of government. 0R is at the discretion of. 0R is at the discretion of. किदी discretion ते है जी 0R? Prime Minister, Speaker, Opposition Leader या फिर President. 0R. 0R. देखो एक हुंदा क्वेश्चन आर, फिर हुंदा है एजेंडा हाउस ਦਾ एजेंडा ਤੇ क्वेश्चन आर ਦੇ ਗਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 0R. So 0R is actually a discretion of speaker. It's up to speaker. Very good. Important. Okay. So which of the following is not associated with parliament? इन्ना जो केड़ी चीज ऐसी है जेड़ी पार्लियामेंट नाल एसोसिएटेड नहीं है? प्रोरोग हाउस नु प्रोरोग करना, एडजर्न करना, डिसॉल्व करना या डिसमिस करना? वेरी इजी. जेड़ी प्रोरोगेशन है या एडजर्नमेंट है, एडजर्नमेंट की होंदा है सैशन टर्मिनेट कर दिता जाता है. सैशन सॉरी सिटिंग एडजर्न होंदी है. एडजर्नमेंट दे विच की होंदा है सिटिंग एडजर्न होंदी है. इट इज ओनली सिटिंग व्हिच गेट्स एडजर्न. प्रोरोगेशन की होंदा है सिटिंग प्लस सैशन दोनों गेट्स टर्मिनेटेड. डिसॉल्व दे विच होंदा है हाउस ही डिसॉल्व कर दिता जाता है, बट डिसमिस इज नॉट द टर्मिनोलॉजी व्हिच इज एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट. ओके जी, is that fine? कच्चे हो हले, मैं देख रहे हैं हले थोड़े कच्चे हो सवालों च. हैवर मैं मल्टीपल टाइम्स अपनी ही लाइव सीरीज दे विच ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. पंचायती राज was first introduced in India in October 1959 in Rajasthan. Rajasthan च किथे? What place? What place? Rajasthan च. Panchayati Raj was first introduced in India in October 1959 in what place? Rajasthan, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. किथे जी? Nagaur. Very good, Nagaur. A college student desires to get elected to the municipal council of a city. जेड़ा college student है, he desires to get elected to the municipal council of a city.
The validity of his nomination would depend on the important condition among others that he obtains permission from the principal of his college, he is a member of political party, his name figures in the voters list, या फिर he files a declaration owing allegiance to the constitution of India. So एक college student है वो desire कर रहा है कि मैं elect होके जावां municipal council अपने शहर दे, okay? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ nomination ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ depend ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ important condition है? अपने कॉलेज के प्रिंसीपल को जावे जिहदे नाल ओहदी अक्सर बनती नहीं सी कि सर मैनूं इलैक्शन लड़ लैण दिओ, परमिशन दे दिओ, या फिर वो मैंबर होवे पोलीटिकल पार्टी का, ये जरूरी है, जे इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता होवे फिर। सो ये तां वेग जिहियां स्टेटमेंट सानूं लगदियां। सो हिज नेम फिगर्स इन द वोटर्स लिस्ट, दिस मेक्स सम सेंस, ही फाइल्स अ डिक्लेरेशन ओइंग एलिजिएंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाद दीयां गल्लां। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड द नियरेस्ट आंसर, इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, वुड बी सी। गुड, शाबाश, ठीक है जी, समझ रहे हो? नेक्स्ट, if a panchayat is dissolved, elections are to be held within. If panchayat is dissolved, elections are to be held within what? 1 महीने ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ dissolve ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ elections हैं they are to be held within 1 month, 3 months, 6 months, 1 year. So right answer is 6 months. Within 6 months ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ election ਦੁਬਾਰਤੀ ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ गवर्नमेंट बनती है, एज इन जी नवी पंचायत बन के आती है, इट एंजॉयज द टेन्योर फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम ओनली, ओके? सो पीसा एक्ट, दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। पीसा एक्ट बारे, इन द एरियाज कवर्ड अंडर पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, व्हाट इज द रोल power of Gram Sabha? Gram Sabha has the power to prevent alienation of land in scheduled areas. Gram Sabha has the ownership of minor forest produce. Recommendation of Gram Sabha is required for granting prospective license or mining lease for any mineral in the scheduled areas. So question कह रहा है ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਵਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ what is the power of the ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ? ਪੀਸਾ ਐਕਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਨੀਏਟ ਫੀਲ ਕਰਵਾਈਏ, उन्होंने एलिनेट फील करवाइए, ओके? सो व्हाट वी डू, असी पीसा एक्ट इवॉल्व किया। पीसा एक्ट की करता है, उत्थे तक वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नूं लैके जांदा है, बट विद सर्टन चेंजेस, ठीक है? जिहड़े सर्टन चेंजेस हैं वो किहड़े चेंजेस ने, वो यही क्वेश्चन तुहानूं पूछ रहा है कि उत्थे दी ग्राम सभा कोल की है, ओके? Screen is not clear? ਹੁਣ देखो clear? ਹੁਣ देखो clear है? मैं पढ़ के सुना रहा थानू। In the areas covered under PISA Act, in the areas covered under PISA Act, what is the role or the power of Gram Sabha? ओके, मैं पढ़ के सुना रहा। ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज। ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस ऑफ माइनिंग लीज फॉर एनी mineral in the scheduled area. So if you are getting uncomfortable with this question, let us straight away switch to answer, which is 1 and 2. 1 and 2 are right, third is not right, okay? सो जिथे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आ जाती है ना, एनी मिनरल एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आ जाती है, यूजुअली रॉन्ग होती है। ये तो क्लियर होएगा, है ना? द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। सो पंचायती राज सिस्टम सारे पंजाब के पेपर लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर तुहानूं मैंशन कर रहा। पंचायती राज सिस्टम सारे पंजाब के पेपर लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट।
The fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure which among the following? People's participation in development, political accountability, democratic decentralization, financial mobilization. केड़ा correct है जी? People's participation in development, Panchayati Raj system is to ensure which amongst the following? ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ so you guys are saying D, it is 1 2 3 and 4, so understand this, it is not 1 2 3, it is 1 and 3. People's participation in development and then democratic decentralization, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਈਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਆਰਨਟ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾय ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ devolve the powers, devolution of the powers, therefore it is decentralization. उसके अलावा we want people should be participating in the development. Political accountability, how are you ensuring political accountability by पंचायती राज system? देखो जी थानू लगता है कि बड़े चंगे options हैं and हो गई, but understand this fundamental objective लिखे। Okay, power of Supreme Court of India to decide between disputes the center and the state falls under. Power of Supreme Court of India to decide disputes between center and the state falls under. ਤੁਸੀਂ jurisdiction ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ original jurisdiction, ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ appellate jurisdiction, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ writ jurisdiction, कुछ होंगे एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के केस दे स्पेशल लीव पटिशन भी होंगे। एनी हाउ वी नॉट गोइंग ऑन टू दैट इन डिटेल। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस फॉल अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सो जब ओरिजिनल जुरिडिक्शन का असं जिक्र कर रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू मीन? वी आर ट्राइंग टू से कि जिहड़ी ओरिजिनल जुरिडिक्शन हैगी है, जिहड़ी ओरिजिनल जुरिडिक्शन हैगी है, इहदे च की हुंदा है कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਨ ਉਹ ਬਣੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੂਗੀ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। दैट मींस ओरिजिनली मेरा काम ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ओरिजिनली ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ। The salaries and allowances of the judges of the high court are charged to, salaries and allowances of the judges of high court are charged to, किथे चार्ज हुंदा जी? एक हुंदे नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर, एक हुंदे चार्ज एक्सपेंडिचर। जेडे नॉन चार्ज हुंदे इन्हां ते की हुंदी है? वोटिंग। और जेडे चार्ज है उन्हां ते वोटिंग नहीं हुंदी। सो इट इज चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ओके जी। Assertion: in India, every state has a high court in its territory. The Constitution of India provides a high court in each state. In India, every state has a high court in its territory. The Constitution of India provides a high court in each state. What is true and what is false? This is very easy. D. A is false, but R is true. ठीक है? So Constitution of India provides a high court in each state. That is the other thing. हर के एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जेक्टिव इज एंजॉयड बाय, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव। सो मैं तुहानू दस्सिया सीगा 3 विंग्स 3 ब्रांचेस, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इच किया जा रहा है जिहड़ी सेपरेशन है एग्जेक्टिव दी जुडिशरी नाल, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव इज एंजॉयड बाय कि किहदे विच तुहानू देखण नूं मिलदी है? प्रैम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 7th शेड्यूल या फिर कन्वेंशनल प्रैक्टिस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। राइट आंसर इज
Directive principles of state policy. Directive principles of state policy. Next, prohibition of discrimination on grounds of religion, etc. Prohibition of discrimination on grounds of religion, etc. Article 15 of the Constitution of India is a fundamental right classifiable under. Fundamental right, Article 15, classifiable under right to freedom of religion, right against exploitation, cultural and educational rights, right to equality. Right to freedom of religion, right against exploitation, cultural and educational rights, the right to equality. हाँ जी, prohibition of discrimination on grounds of religion, etc. Right to freedom of religion, right against exploitation, cultural and educational rights, right to equality. किधर है जी ये? Article 15, very easy, right to equality. अरे की करते हो यार? In the Indian Constitution, the right to equality is granted by the 5 articles. They are, in the Indian Constitution, right to equality is granted by 5 articles. They are, what are those 5 articles? Jede grant karde right to equality. Don't give me the wrong answer now. Yeah, that's right. Article 14 to 18. So fundamental rights, very important. Fundamental rights, very important. Okay. So I'll come up with a video ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ super ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ. Let's say some 50 questions or in 2 parts 50 plus 50 100 questions करेंगे. Okay, so be prepared for that. Which one of the following rights was described by B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution? So this is very easy question. इस तो बाद ਅਸੀਂ class आज conclude करेंगे. Don't give me the wrong answer. B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar said heart and soul of the Indian Constitution to which article? ਕਿਹੜੇ article ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? Right to freedom of religion, right to property, right to equality ਜਾਂ ਫਿਰ right to constitutional remedy. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ heart and soul ਕਿਸ ਨੂੰ? Article 32 ਨੂੰ, that is right to constitutional remedies. Is that fine? Okay, so that was all for today's class. मिलते हैं फिर next class. Okay, thank you very much.